Breaking news over the latest ruckus that has broken out during the JPC meeting on JPC committee meeting on the Waqf Amendment Bill. Now, remember, 10 of the opposition MPs have been suspended in the latest after ruckus broke out during this meeting. There was massive chaos, and India Alliance members, Kalyan Banerjee once again, who has gone violent also earlier in one of the JPC meetings. Now, what we know is that the suspended MPs are alleging that it was like an undeclared emergency during the meeting, as the chairperson of the panel, Ms. Jagdambika Pal, did not listen to anyone. And there was a ruckus thereafter. Let's take a listen into what Kalyan Banerjee had to say. हम लोग का जेपीसी का मीटिंग था, स्टडी विजिट था 19, 20 और 21 जनवरी, पटना, कोलकाता एंड लखनऊ। लखनऊ में जब आया 21 तारीख, जेपीसी चेयरमैन बोला कि 24, 24 एंड 25 मीटिंग होगा। एजेंडा क्या, क्लॉज बाय क्लॉज बिल का डिस्कशन होगा। तो हम लोग बोला था कि आप एक काम कीजिए, इसको 30, 31 कीजिए। अभी अभी हम लोग स्टडी विजिट किया, हम लोग को भी बहुत सा काम है, काम करना होगा। बोला अच्छा हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर नहीं किया। हम लोग कल रात में आ गया, 24 एंड 25 मीटिंग है। रात 11:30, पौने 12 बजे एजेंडा चेंज कर दिया। बोला जम्मू कश्मीर को आदमी को सुनेगा और कोई लॉयर को सुनेंगे। तो हम लोग प्रोटेस्ट किया, स्लोगन दिया, 10 मिनट एडजर्नमेंट किया। और जब भी मीटिंग चलता है उनका फोन आता है, कोई डायरेक्शन कुछ देता है, फोन में लेता है और ऐसा कर रहे थे। उसके बाद एडजर्नमेंट का बाद हम लोग को 10% को सस्पेंड कर दिया। ऑपोजिशन का जितना मेंबर था सबको सस्पेंड। ये जेपीसी जो है फर्स्ट है, ये जेपीसी को मकारी बना दिया। चेयरमैन तो सिर्फ चेयरमैन है, कोई ऊपर से जो बोल रहा है हो रहा है। डेमोक्रेसी हैज डिस्ट्रॉयड। And we also have a reaction from the chairperson of the JPC committee, against whom questions are being raised by the suspended MPs. Now, Jagdambika Pal says he alleges that Kalyan Banerjee of TMC was using unparliamentary language against him. Listen in. वो वक्त पे जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो लगातार उनकी इच्छा थी और उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि हमें जेपीसी के सामने अपीयर होने देना चाहिए। समय नहीं था, आज हमको 25 तारीख को क्लॉज बाई क्लॉज करना था। तो उन्होंने कहा हम आपके घर पे आके मेमोरेंडम दे देंगे। तो मैंने सोचा कि अगर सभी राज्यों में हम गए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यूपी, तो जम्मू कश्मीर का भी अगर ये डेलीगेशन आना चाहता है, पिछले दिनों हम लोग जाना भी चाहते थे, बर्फबारी थी, तो हमने फिर आज उनके डेलीगेशन को जेपीसी के सामने सुनने का फैसला किया। कुछ और डेलीगेशंस हैं, अब हम क्लॉज बाई क्लॉज 27 तारीख को बैठक करेंगे। मुझे लगता है जेपीसी के सामने वक्त के संबंध में जो अपने प्रपोज अमेंडमेंट हैं उस पर अपना विचार रखना चाहते हैं, तो हमने सभी को अवसर दिया, मतलब स्कॉलर्स हो, वाइस चांसलर्स हो, विचारक हो, वो भी एक विचारक हैं और वो अपना इस पर व्यू देना चाहते हैं, तो हमने उनको My colleague Harsha Janwani joins us live on the broadcast. Now, Harsha, not the first time that we've seen ruckus breaking out during the JPC meeting. Only goes on to show that how serious are these MPs, because they only resort to, high drama, even violence. We've seen Kalyan Banerjee being suspended earlier. Also, he breaks a bottle. I don't know what all is happening this time. He's alleged to have used unparliamentary language, and now they are alleging that it was Jagdambika Pal who was not listening to them. You rightly pointed out, Rakshita, this is not the first time when we have seen that opposition MPs creating ruckus, using unconstitutional language or storming in the JPC Waqf parliamentary meeting. We have seen it during every JPC Waqf meet. But this time, the opposition MPs were furious over the change of the date of the clause-by-clause discussion. Earlier, the clause-by-clause discussion on the Waqf amendment was supposed to happen on 24th and 25th both. But this time, the dates changed, and Jagdambika Pal, the chairman, decided to call Jammu and Kashmir stakeholder Mirwais Farooq to dispose in front of the committee, and also the clause-by-clause discussion will now happen on 27th, and that was the agitation from the side of opposition MPs, and that is the reason why 10 opposition MPs have been suspended. Rakshita, the meeting of the JPC is already underway.
The ruling members and the TDP, LJP members are already there inside in the meeting, but there are 10 opposition MPs from the parties like TMC, DMK, Samajwadi Party, AIMIM and Congress leaders are not there in the Waqf meeting today. They will be appearing again on 27th, but yes, storming out in the JPC meeting is not the first time. The behavior of opposition we have seen right now, and also government is very clear cut on the amendment and also the discussion on one-on-one clauses and to see whether opposition has any dissent or not. Back to you. All right, even A. Raja has reacted to the developments coming in on that. Take a listen and viewers to reaction. What transpired into the stormy session today? The Jammu and Kashmir leaders were supposed to go with the proceeding, but before that only there was a ruckus in the JPC meeting. No, what happened I will explain. Last 19th, 20th, 21st, Joint Parliamentary Committee on Waqf had a tour program for Uttar Pradesh, West Bengal, then the Bihar, Patna, Calcutta and Lucknow. We went there. So the tour was dispersed on 21st. When the tour was on Lucknow on 20th, suddenly circular came, 24th another meeting will be there to discuss class by class amendments. And we were directed by the chairman there itself, class by class amendment, you must give honor before 22nd, 4 p.m. That itself is very strange. Even he is not ready to give 48 hours almost. In spite of that, we wanted to cooperate with the chairman. We all did our homework and ultimately amendments were written and sent it to the JPC office. Where in Lucknow, we agreed that we will give our amendments to the bill, but our request is, since we are discussing in 21st, you change the date of 24th. Let us have it 30th, because 31st is the President address. So whole day 30th, 31st half a day after the President address, we can do whatever you want, we will discuss. And we also have a reaction coming in from the BJP. Parajita Sarangi has also reacted to it on the ruckus that was allegedly created by the opposition leaders in the JPC meet. Listen in. आज जब हम सब मौजूद हुए, आज दो संस्थाओं के मतों को सुनना था. एक जम्मू कश्मीर की संस्था है और दूसरी लॉयर्स ऑफ जस्टिस दिल्ली की. ये दोनों संस्थाओं के लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स हैं और जिनका नेतृत्व श्री कल्याण बैनर्जी जी दे रहे हैं, उन्होंने बड़ा हंगामा किया हुआ है. और अभी मैं सभा कक्ष से बाहर आकर आपसे बात कर रही हूँ. बहुत हंगामा है, 2 बार एडजर्नमेंट हो चुका है. और दुख की बात यह है कि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब, जो इन 34 मीटिंग्स में लगातार हम लोगों के साथ अच्छा संबंध बना रखे हैं, सबके साथ बड़ी अच्छी से बातचीत करते हैं, सबके मतों को सम्मान देते हैं, उनके विषय में गंदी बातें कही जा रही हैं और उनके विरोध में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग श्री कल्याण बैनर्जी जी कर रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं. And the latest update we have